आज का मेरा टॉपिक लॉज ऑफ एजुकेशन के हवाले से है। तालीम के कवानीन, लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला जो लॉ है वो रेडनेस के हवाले से, तैयारी के हवाले से है, प्रिपेयर्डनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दूसरा जो लॉ है वो एक्सरसाइज के हवाले से है। प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाती है किसी भी चीज़ को। लॉ ऑफ इफेक्ट, तीसरा जो लॉ है, कानून है, वो क्या है? इफेक्ट का है, असर का है, सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ प्रीमेसी, लर्न फर्स्ट इम्प्रेशन। इसमें प्रीमेसी का क्या मतलब है? फर्स्ट इम्प्रेशन। लॉ ऑफ रिसेंसी, नाउ मोस्ट रिसेंट और बेस्ट रिमेंबर्ड। Number 6, law of intensity, impact, exciting, X role playing. Law of freedom, right to freedom. आज़ादी का कानून है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी जो है वो इम्पैक्ट है किसी भी चीज़ का। नंबर 8, लॉ ऑफ इम्पोर्टेंस, एसेंशियल्स। इम्पोर्टेंस के हवाले से कानून है कि क्या अहमियत है और इसके एसेंशियल्स क्या है। डोमेन्स इन एजुकेशन, एजुकेशन के डोमेन कौन से हैं? कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। पहले जो है वो कॉग्निटिव है, इसमें क्या आ जाता है? मेंटल स्किल्स, नॉलेज है इसमें। इफेक्टिव डोमेन, ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज। इसमें फीलिंग्स जो है, एहसासात की ग्रोथ होती है और जज्बाती एरियाज जो हैं, एटीट्यूड, रवैये जो हैं, जज्बाती रवैये, उनकी ग्रोथ होती है। साइकोमोटर, मैनुअल और फिज़िकल स्किल्स। इसमें मैनुअल या फिर फिज़िकल स्किल्स आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग्स के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से असूल हैं? नंबर 1, क्रिएट एंड इफेक्टिव लर्निंग, एक इफेक्टिव लर्निंग जो है वो क्रिएट की जाए। बी, फोकस, अटेंशन जो है उस पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। कनेक्ट नॉलेज को जो है वो मिलाया जाए, उनके दरमियान रब्त पैदा किया जाए। डी, हेल्प स्टूडेंट ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज, स्टूडेंट्स की मदद की जाए कि वो नॉलेज जो है अपना उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, तरतीब दे सकें। प्रोवाइड टाइमली फीडबैक जो है वो टाइम पे देना चाहिए। डिमांड क्वालिटी की, म्यार की जो है वो डिमांड की जाए। बैलेंस हाई एक्सपेक्टेशंस विद स्टूडेंट सपोर्ट, हाई एक्सपेक्टेशन जो हैं वो हासिल की जाए विद स्टूडेंट सपोर्ट, तलबा के सपोर्ट के साथ। इन्हेंस मोटिवेशन टू लर्न, मोटिवेशंस को जो है उसको बढ़ाया जाए टू लर्न के लिए। कम्युनिकेट योर मैसेज इन वैरायटी ऑफ वेज, अपना जो मैसेज है उसको मुख्तलिफ वैराइटीज़ में, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो कम्युनिकेट किया जाए। हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रोडक्टिवली मैनेज देयर टाइम, स्टूडेंट्स की मदद की जाए कि वो अपने टाइम जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। स्टेजेस ऑफ लर्निंग, स्टेजेस कौन सी है लर्निंग की? एक्विजिशन, लर्न न्यू स्किल्स। पहली जो स्टेज है वो एक्विजिशन है, किसी भी नए स्किल को, किसी भी नई महारत को सीखना है। फ्लुएंसी, प्रैक्टिस फॉर मैस्टरी ऑफ स्किल। जनरलाइजेशन, अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, वैरायटी ऑफ सेटिंग। अडॉप्टेशन, यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस ओवर टाइम। Bloom taxonomy, remember, recall facts and basic concepts, define, duplicate, list, memorize stage. Number 2, understand, explain ideas or concept, ideas, ख्यालात और जो concepts हैं उनको बयान किया जाता है। Classify, describe, discuss, explain, locate, recognize, apply. यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है उसको नए सिचुएशन में इस्तेमाल करना। एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, यूज़, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, एनालाइज। ड्रा कनेक्शंस अमंग आइडियाज़, आइडियाज़ के दरमियान जो है वो
रब पैदा करें, उनके जोड़ें आइडियाज़ को, डिफ्रेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, contrast, distinguish, examine, experiment, question, test, evaluate, justify a stand or decision, appraise, argue, defend, judge, select, support, value, critique, weight, create, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, कोई भी जो है वो नया और ओरिजिनल वर्क जो है वो पैदा करें, डिज़ाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, फार्मूलेट, ऑथर। अंडरस्टैंड टैक्सोनॉमी, रिमेंबरिंग सबसे पहले इसमें आती है, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग। रिमेंबरिंग क्या, था रिकॉलिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग सेंस ऑफ द मटेरियल यू हैव लर्नड, applying, use knowledge gained in new ways, जो आपका नॉलेज है उसको नए तरीकों में इस्तेमाल करें। एनालाइजिंग, ब्रेकिंग द कंसेप्ट इनटू पार्ट्स, जो कंसेप्ट है, ख्यालात है, उसको आप पार्ट्स में, हिस्सों में तकसीम कर लें। इवेलुएटिंग में मेकिंग जजमेंट, जो जजमेंट है वो बनाएं। क्रिएटिंग, पुटिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर इन एन इनोवेटिव वे, इंफॉर्मेशन जो है उसको आप टुगेदर कर लें इन एन इनोवेटिव वे, किसी भी तरीके से। इफेक्टिव डोमेन, रिसीविंग is being aware of, sensitive to the existence of a certain ideas, material or phenomena, and being willing to tolerate them. X, to example, to differentiate, to accept, to listen for, to respond to. Responding is committed in some small measure to the ideas, materials or phenomena involved by actively responding to them. Example, to comply with, to follow, to command, to volunteer, to spend leisure time in the acclaim. Valuing is willing to be perceived by others as valuing certain ideas, materials or phenomena. Example include, to increase measured proficiency in, or relinquish, to subsidize, to support, to debate. Effective domain में organization is to relate the value to those already held and bring into harmonious and internally consistent philosophy. Example, to discuss, to theorize, to formulate, to balance, to examine. Characterization by value or value set is to act consistently in accordance with the values he or she has internalized. Example include, to revise, to require, to relate, to rated high in the value, to avoid, to resist, to manage, to resolve. Psychomotor domain, perception, sensory cues to guide motor, set mental, physical and emotional dispositions that make one respond in a certain way to a situation. Guided response, first attempt at a physical skill, trial and error coupled lead to better performance. Mechanism, responses are habitual with a medium level of assurance and proficiency. Complex over response, complex movements are possible with a minimum of wasted effort and high level of assurance they will be successful. Adaptation, movements can modify for special situations. Organization, new movements can be created for special situations. Learning theories, behaviorist, classical, operant, connection, social learning, and purpose. PCSO, Polvo, classical, scanner, operant. Classical conditioning, A1, Polvo, 2 stimuli are linked together, one neutral plus one natural response, adhesive principal response attached to stimulus to evoke new response. Experimentation, salvation of dog and ringing of the bell, stimuli response,
Also, unconditional stimulus automatically produce an emotional or psychological response. Unconditional response